Okay, so देखिए basically this table 8-4 it gives you the power screw safe bearing pressure जो अभी हम कह रहे थे ना कि there is a bearing pressure, so that is the pressure at the interface or that is the stress at the interface. So when you are designing power screws, you should keep in mind that if you are using a screw material which is this material, and that might be, over here if you look at this, most of it is steel, and the nut material is either bronze, cast iron, or any of these. If you have a combination of these two, your stress should not exceed this, okay, at low speeds and the speeds limits given over here. So basically what does this table provide you is the safe bearing pressure. If your pressure exceeds than this means that your thread is not safe, so you should consider this in your designing, ठीक है जी. इसी तरह this gives you the coefficient of friction or the friction coefficient जो पिछले स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया कि it is between the nut and the screw, ठीक है जी, दैट इज योर एफ. एंड सिमिलरली, और जो हमने उधर फॉर्मूले में इस्तेमाल किया which we wanted to find out, or TR and TL, the amount of torque required to rise and lower the load, में जो small f इस्तेमाल हो रहा था, that is from this table, which is the coefficient of friction for threaded pairs. And that can be, as we said, that the screw material, if it is steel, and if it is steel on steel, then your coefficient of friction ranges between these two, so you can take value from this, from this in your when you are designing. Similarly, FC, which was the collar stress, the torque required when the collar is added. So this gives you the values of FC, which is the thrust collar friction coefficient. तो अगर आपको याद हो तो, और TR was equal to the TR that we calculated plus TC. तो TC में जो आप F इस्तेमाल करेंगे या FC इस्तेमाल करेंगे, that will come from this table. ठीक है जी, उसकी value that will come from this table. Now देखिए, in screws, that was power screws, but if we look at threaded joints, basically आपके पास जो threaded joints है उसमें मुख्तलिफ types of screws हैं या threaded elements हैं. For example, one of them is the hexagonal head bolt or the hexagon head bolt, and I'm sure that you have drawn the hexagonal nut in your drawing. Usually जब आपके पास हम बोल्ट की बात करते हैं तो a bolt is used with a nut, ठीक है जी. A bolt is always used with a nut, and then the hexagonal head bolt is the most common bolt that is used, and all these are standard, the dimensions are standard. So if you look over here, this is the head of the hexagonal head bolt, and you would see that it is marked as H, that is the dimension. Approximately there is a protrusion over here which is 1/64 of an inch, and that does not allow, when it goes into the hole, it does not allow dirt and all these things into the hole for the bolt. And then it is accompanied by a nut over here that goes and fits over this bolt, ठीक है जी, and that is your hexagonal um, nut. So usually it uses a nut and it is heavy duty that you use it. Now if we come to a screw, the difference between a bolt and a screw is that a screw does not use a nut. Rather, a screw is fitted in a hole that is threaded.
ठीक है जी. तो it is, its head is thinner and often used as screw in a threaded hole without a nut. So that is the difference between a nut and a screw. And again, there are different types of screws that are used. For example, machine screws, socket head screws, and they all have different applications. They have different heads that you would see. But again, these are standard. These dimensions are standard, so you have to go and look at your book. What is a, what are these different screws? For example, if you look at screws, there are some flathead screws. Some of them are Phillips. आपने screw driver भी देखे होंगे, उसमें flat Phillips, which is the, जिसको हम चौरस कहते हैं, right? So these are different heads that are used for different purposes, and have a look at this figure in your book. Now let's discuss the hexagonal head bolt. Hexagonal head bolts are the ones that are most common for engineering applications, and the standard dimensions are included in table A29. We will look at that. Now W जो है, that is the size across the flats, and that will be the same for the nut too. ये जो size है ना, यहाँ से यहाँ तक, the size across the flats, that is 1.5 times of the nominal diameter. ठीक है जी. So a nominal diameter is this diameter, the nominal diameter of the bolt. Rather, I'll go a little further and see, okay, how do we express the size of a bolt. ठीक है जी. और a threaded bolt की हम जो size है, how do we represent that? For example, let's say there are two systems that we would use. ठीक है जी. एक हमारा जो जो आम ब्रिटिश सिस्टम है, इफ यू लुक एट दिस, इट सेज, यहाँ पे आप देखें तो आई जस्ट रीड दिस. ठीक है जी. It says that it is 1 over 4 dash 20 times 3 by 4 inches UNC to grade 5 hexagon held bolt. What does this mean? देखें, every dimension mentioned over here, that means something. For example, when we express a hexagonal head bolt, what we would say 1 by 4 dash 20. What does this mean? That the 1 by 4 is the diameter of the bolt. So that is the nominal diameter. And 20 is the threads per inch. ठीक है जी. The threads per inch times 3 by 4. 3 by 4 is the length of the bolt. तो हमने यहाँ पे कितनी चीजें डिफाइन की हैं देखें. One is the nominal diameter, which would be this diameter. ठीक है जी. And that is 1 by 4. 20, so 20 means the, if we take 1 inch, how many threads does this have? ठीक है जी. तो this is known as TPI, or threads per inch. And 3 by 4 is the length of this bolt. कि इसका length कितना है. UNC2, that is the thread series. This is the standard series. UNC is the Unified National Course Thread. It can be UNC or it can be UNF. ठीक है जी. तो ये जो है, that is the Unified National Fine Thread or Unified National Course Thread. 2 is the class. That, so again, this is just the standard that goes with that. Grade 5, this grade 5 means what is the material. There are different grades: grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. So this expresses the material, and the properties for this material are given in some sort of table
or a reference. So when we say grade 5, now we know कि इसका strength कितना होगा. We can read that from a table. And then it says hexagonal head bolt. So it just tells you okay, what type of head does this have. We can also express all these things in metric system. For example, हम कहेंगे M12 by 1.75 ISO 4.8 hex head bolt. ठीक है जी. What does this mean? Again, this M means it is metric, and 12 is the nominal diameter, the 1.75 is pitch. उसमें क्या था कि हमने pitch की जगह what did we define? We defined the number of um, um, the number of threads per inch, but over here we are defining the pitch, so it is the same. ठीक है जी. Pitch is basically the length जो है from one thread to another between the consecutive point, यानी crest से crest तक या trough से trough तक. So that would be the pitch. And ISO, ठीक है जी, again it is the standard 4.8, that is the material class, एंड हेक्सागोनल हेड बोल्ट. ठीक है जी. तो हम अगर किसी बोल्ट की बात करते हैं तो दिस इज द वे, दिस इज द स्टैंडर्ड वे दैट वी विल एक्सप्रेस दैट. ठीक है जी. और ये हमारे पास टेबल्स हैं जिसमें उसकी स्ट्रेंथ वगैरह दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एसएई ग्रेड 5 की हमने बात की थी ना, तो ग्रेड 5 का जो साइज है वो ये होगा, मिनिमम प्रूफ स्ट्रेंथ ये होगा, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ये होगा, यील्ड उसका ये होगा, एंड सो ऑन. ठीक है जी. So the material is carbon and it is quenched and tempered. ठीक है जी. Now let's see, जो हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड की. ठीक है जी. तो if you look over here for for this hexagonal head, what we have here is कि आपके मुख्तलिफ dimensions है. For example, looking over here, this is the head length h, और यहाँ पे आप देखें तो there are two portions in the bolt. One is the threaded portion and the other one is the unthreaded portion. ठीक है जी. So the threaded portion and the unthreaded portion, basically आपका जो ये length है यहाँ से लेके यहाँ तक, that is L, and that will be equal to the length of the threaded portion plus the length of the unthreaded portion. ठीक है जी. तो ये इसके बराबर होगा, we know that. ठीक है जी. इस फिगर से अगर आप देखें, so this is standard. For example, looking over here, the threaded length LT, ये क्या होगा? LT is the length of the threaded portion. यानी आपके पास कोई बोल्ट होगा तो उसका लेंथ ऐसे नहीं होगा कि आप जितना मर्जी you thread the portion, but it is some standard. For example, LT is equal to 2 times D plus 1/4 of an inch if your length is less than 6 inches, or it is 2 times d plus 1 by 2 inches if your length is more than 6 inches. ठीक है जी. तो ये आपका एक्सटेंड. इसी तरह मेट्रिक में भी देयर आर थ्री different lengths के and your diameter कि इसमें हो तो आपका LT इतना होना चाहिए. ठीक है जी. सो ये आपका LT होगा, और L चूंकि आपको दिया गया होता है तो योर L जो अनथ्रेडेड होगा दैट विल बी दिस कैपिटल L माइनस LT. ठीक है जी. अच्छा, सिमिलरली आपके नट्स जो हैं, नट्स के लिए भी अगर आप टेबल अपेंडिक्स A-31 में चले जाएं तो देयर आर टिपिकल स्पेसिफिकेशंस गिवन फॉर nuts, and these nuts are generally well, all the nuts are standard nuts, and again the first three threads of the nut carry the majority of the load. जैसे अभी पिछले केस में हमने डिस्क्राइब किया कि 38% and then 25% and then 18% of the load is carried by the first three threads. ठीक है जी. So
इनमें इस तरह है कि जनरली जो नट्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक दफा आप बोल्ट के साथ कोई नट इस्तेमाल करें तो देर इज लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक स्ट्रेन होता है। एक दफा आप नट को अन स्क्रू करें या अनथ्रेड करें या यू नो टेक आउट द नट, सो द नट शुड नॉट बी रीयूज्ड अगर उसमें लोकल प्लास्टिक स्ट्रेन हुआ है। लेकिन जनरली हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में वी डू रीयूज दैट नट, हम दोबारा उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। लेकिन क्रिटिकल एप्लीकेशंस में हम नट जो है उसको रीयूज नहीं करते। अदरवाइज आपने देखा होगा गाड़ी में व्हेन यू टेक आउट द टायर यू स्टिल यूज द सेम नट्स, लग नट्स आप इस्तेमाल करते हैं दोबारा। इसी तरह आप कोई भी आम एप्लीकेशंस में इफ यू ओपन इट अप यू जस्ट यूज दोस, ठीक है जी। इसमें भी देर आर डिफरेंट टाइप्स के वॉशर फेस हैं, यू डोंट नीड अ वॉशर ओवर हियर, द वॉशर इज ऑलरेडी बिल्ट इन हियर। आप दो नट्स लगाते हैं लॉकिंग के लिए, ठीक है जी। बट लुकिंग एट इट फ्रॉम द, go ahead and look at this in your book, but we will discuss the design point of view of this, ठीक है जी। अगर आप देखें तो जनरली आपका जो, लेट्स से आपके पास दो पार्ट्स हैं एंड लेट्स से दिस इज पार्ट वन, पार्ट नंबर वन, ठीक है जी, एंड दिस इज योर पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर टू, एंड यू वांट टू जॉइन दीज टू। तो देखें आप इन दो पार्ट्स को आपस में कैसे जोड़ेंगे कि यू विल पुट अ बोल्ट एंड देन अ वॉशर, ये washer, and then again a washer over here, and then a nut, and some of the bolt is sticking out at the end over here, ठीक है जी। तो यहां पे क्या है कि इस the distance or the, if you measure from the face of the head से लेके up to the face of the nut, that is known as L, and what is L? That is known as grip, ठीक है जी। तो grip length L includes everything being compressed by the bolt preload। देखें आप जब इस नट को टाइट करते हैं, right, so what happens, it is going to squeeze this washer, part 1, part 2, and this washer. So everything between the face of the bolt and the face of the nut are going to be compressed. तो ये जो लेंथ है that is known as grip, ठीक है जी। Are you getting my point, everyone or anyone? Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, सो नाउ द वॉशर अंडर द हेड जो है ये वाला, जैसे अभी हमने कहा, इट प्रिवेंट्स द बर्स एट द होल फ्रॉम गॉगिंग इनटू द फिलेट अंडर द बोल्ट हेड, इट वोंट लेट एनीथिंग फॉल इनटू दिस होल, ठीक है जी ना। सो अगर हम स्क्रू की बात, दैट वाज अ बोल्ट, अगर हम स्क्रू की बात करें तो देखें दिस इज योर पार्ट वन एंड दिस इज योर पार्ट टू, ठीक है जी। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ना चाहते हैं, देर इज नो नट ओवर हियर, इट इज जस्ट के यहां पे किया क्या गया है कि दिस इज लेट्स से द फर्स्ट पार्ट, और दूसरे पार्ट को हमने क्या किया है कि वी हैव अ होल इन हियर इन द सेकंड पार्ट एंड दैट होल इज थ्रेडेड, so your bolt or your screw is going to be tightened into this। यहां पे ये स्क्रू इसके अंदर जब हम, you put that in, right, that screw is put in here, so that screw goes in here। अब इसके लिए आप ग्रिप कैसे डिफाइन करेंगे, बिकॉज देर इज नो नट दैट यू से फ्रॉम द फेस ऑफ द स्क्रू हेड टू द फेस ऑफ द नट। इसके लिए ये जो L है दिस इज सम स्टैंडर्ड वैल्यू, ये कहीं पे होगा इधर तक,
यानी कहीं तक ये स्क्वीज करेगा, एंड वी विल डिस्क्राइब दैट. सो ओनली पार्ट ऑफ द थ्रेडेड लेंथ ऑफ द बोल्ट कंट्रीब्यूट्स टू द इफेक्टिव ग्रिप एल. ठीक है जी. और वो कितना होगा, वी कैन we have a value for that. For example, for screw in taped hole, जब आप स्क्रू ये होल में थ्रेड्स बनाते हैं उसको हम टेपिंग कहते हैं. यू वुड हैव डन दिस इन योर फिटिंग शॉप प्रोबेबली. तो जितना आपने टेप किया हुआ है उसका ग्रिप कितना होगा, योर ग्रिप इज गोइंग टू बी एच प्लस T2/2 if your T2 is greater than D, or it is going to be H plus D/2 if your T2 is greater than or equal to D. तो देखें यहाँ पे if you look over here very carefully, हाँ, looking over here very carefully, I'll show you कि how does this work. ठीक है जी. देखें ये आपका पार्ट वन पार्ट है, एंड इट हैज गॉट the thickness is T1. The thickness of the second part is T2, and the washer is T. ठीक है जी. तो यहां पे अगर आप देखें, we have threaded hole या taped hole in this part. तो ये आपका जो यहां से लेके यहां तक, दिस होल इज टेप्ड. ठीक है जी. इसमें थ्रेड्स हमने बनाई है, लेकिन आपका जो बोल्ट या स्क्रू है वो कितने कहां तक जा रहा है. स्क्रू जो है दैट ओनली गोज फ्रॉम, यहां से अगर आप देखें तो द स्क्रू गोज फ्रॉम हियर, और यहां पे जाके खत्म हो रहा है. देखें ये स्क्रू यहां पे खत्म हो रहा है, राइट. सो दिस इज योर स्क्रू बेसिकली. तो इस स्क्रू में आपका ग्रिप कितना होगा, दैट इज एल, एंड द वैल्यू ऑफ दैट एल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला विच इज स्टैंडर्ड. ठीक है जी. बाकी जो चीजें हैं कि आपका एल टी थ्रेडेड पोर्शन कितना होगा, तो देखिए दिस इज योर थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द स्क्रू यहां से लेके यहां तक, एंड दिस इज योर टोटल लेंथ ऑफ द स्क्रू विच इज एल. ठीक है जी. और अनथ्रेडेड जो है दैट इज योर एल डी. तो बेसिकली योर एल डी प्लस एल टी जो है, एल डी प्लस एल टी दैट गिव्स यू एल. ठीक है जी. और ये उसमें से ये आपका ग्रिप होगा. एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? हेलो, क्लियर है सर. क्लियर है. अच्छा जी. नाउ जब भी हम बोल्ट और नट से जॉइन करते हैं दो चीजों को, तो लेट्स से if I tighten this, what is going to happen? This is going to be compressed, this is also going to be compressed. ठीक है जी. ये दो चीजें कंप्रेस होंगी, इसी के साथ वॉशर भी कंप्रेस होगा. तो बेसिकली ड्यूरिंग बोल्ट प्रीलोड, इसको हम प्रीलोड कहते हैं, जब हम टाइटन करते हैं किसी भी नट को, तो when this is compressed, what happens to the bolt though? The bolt जो है आपका बोल्ट, जब इसको हम टाइट करेंगे तो what will happen to the bolt? The bolt is going to, इसमें क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी ना. ठीक है जी. सो इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेच्ड. देखिए ये चीजें जो है ना, ये कंप्रेस होंगी, और ये चीज आपका क्या होगा, दिस विल एक्सटेंड, the bolt will extend. So bolt is stretched while members are compressed. ठीक है जी. तो इस किस्म की सिचुएशन होगी कि ये कंप्रेस हो रहा है और यहां पे ये चीज जो है ये स्ट्रेच हो रहा है. सो व्हेन एक्सटर्नल लोड P इज अप्लाइड, और इसके ऊपर आप कोई और लोड अप्लाई करें P, तो आप P अगर अप्लाई करें तो व्हाट विल हैपन कि बोल्ट जो है दैट विल बी स्ट्रेच फर्दर. ठीक है जी. द बोल्ट विल बी स्ट्रेच फर्दर, लेकिन मेंबर्स चूंकि कंप्रेशन में है तो ये स्ट्रेच होगा, तो ये थोड़े से रिलीव होंगे. तो वो कंप्रेशन जो है दैट विल बी रिलीव
समहाउ अनकंप्रेस होंगे, थोड़े से अनकंप्रेस होंगे। ठीक है जी। तो जॉइंट कैन बी मॉडल्ड एज अ सॉफ्ट बोल्ट स्प्रिंग। हम इसको क्या कह सकते हैं, देखें मैं इसको थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि अगर इसको मैं ऐसे करूं कि ये जो है ना ये एक स्प्रिंग है, and when I apply load on this spring is stretched, ऐसे होता है ना। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये वाला भी स्प्रिंग है, ये ये एक स्प्रिंग है, और ये इसके साथ एक दूसरा स्प्रिंग है। ठीक है जी। तो इन दो स्प्रिंग्स के साथ क्या है कि ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, और इन पे जब हम लोड डालते हैं तो ये अनकंप्रेस होते हैं। तो मैं एक मॉडल बना सकता हूं यहां पे, फॉर एग्जाम्पल फॉर बोल्ट फॉर बोल्ट क्या होगा, एक उसका स्प्रिंग जो है ये फॉर दी अनथ्रेडेड पोर्शन, यानी यहां से लेके यहां तक, एंड दैट इज गोइंग टू बी एन एक्सटेंशन स्प्रिंग। ठीक है जी, इसको मैं यहां से, अच्छा, फॉर द थ्रेडेड पोर्शन देयर इज अगेन गोइंग टू बी अनदर स्प्रिंग। ठीक है जी। तो इस स्प्रिंग की स्टिफनेस जो होगी, लेट्स कॉल दैट के डी अनथ्रेडेड पोर्शन, और इसकी जो स्टिफनेस होगी लेट्स कॉल दैट के टी विच इज द थ्रेडेड पोर्शन, और इसके ऊपर लोड हम लगाते हैं पी। ठीक है जी। नाउ वी कैन मॉडल द बोल्ट एज दिस। इसी तरह अगर हम देखें फॉर मेंबर्स, मेंबर्स मीन पार्ट्स जो हमने ज्वाइन किए हुए हैं, इसमें भी दो स्प्रिंग्स होंगे ना, एक पहला पार्ट, ठीक है जी, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्रेशन स्प्रिंग। ठीक है जी, ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। और दूसरा पार्ट टू, तो लेट्स से अगर इस मेंबर का जो स्टिफनेस है दैट इज के वन, और इसकी स्टिफनेस जो है दैट इज के टू, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखें ये इन दोनों को, तो व्हाट आर दे कनेक्टेड इन, ये दोनों मेंबर्स और दोनों बोर्ड्स जो हैं व्हाट आर दे कनेक्टेड इन, कोई बता सकता है? स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल। देखें ये स्प्रिंग्स जो है, एक, दो, तीन, ये किस चीज में है, सीरीज में है ना। लेकिन स्प्रिंग्स अगर हमारे पास ऐसे अटैच हो तो वो किस चीज में होंगे, पैरेलल में होंगे। आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है जी। तो हम इसको मॉडल कर सकते हैं कि अगर हमारे पास स्प्रिंग्स जो है वो सीरीज में होंगे, एंड देयर आर डिफरेंट स्प्रिंग्स, फॉर एग्जांपल दिस इज के टी, के डी, एंड दिस इज के टी। तो इनको अगर हम मॉडल करें तो हमारा जो अगर इससे हम एक स्टिफनेस निकालेंगे तो दैट स्टिफनेस विल बी इक्वल टू लेट्स से के ऑफ द बोल्ट। तो के बी किस चीज के बराबर होगा, वन ओवर के बी, सिंस दे आर इन सीरीज, वन ओवर के बी विल बी इक्वल टू वन ओवर के टी, के डी प्लस वन ओवर के टी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका मॉडल होगा, एंड आई हैव एक्सप्लेन दैट इन योर इन दी इन दी स्लाइड्स, ये ऑलरेडी उसमें है। तो लेट्स से अगर हमारे पास दो दो स्प्रिंग्स, एक का स्टिफनेस के वन है, दूसरे का स्टिफनेस के टू है, तो वी कैन मॉडल दैट एज वन ओवर के, उसकी टोटल स्टिफनेस ये होगी वन ओवर के इज इक्वल टू वन ओवर के वन प्लस वन ओवर के टू। और फिर अगर हम इसका मतलब के वन प्लस के टू, तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें के वन के टू, ठीक है जी, तो ऊपर आपके पास के वन प्लस के टू आ जाएगा, एंड इफ यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, सो योर के टर्न्स आउट टू बी के वन के टू ओवर के वन प्लस के टू। अच्छा, ये जो पोर्शन है वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब दिस, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं। देखें, वी नो कि सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स एप्सिलॉन। ठीक है जी। व्हाट इज सिग्मा? दैट इज योर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए, ऐसे होगा, एंड ई टाइम्स
what is epsilon? Epsilon is delta, uh, whatever the elongation is in there, divided by L होगा. ठीक है जी. यानी the change in length divided by the original length. ठीक है जी. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ. अम, और ऐसे मैं रीअरेंज करता हूँ कि लेट से अगर मेरे पास स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की स्टिफनेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर ये के है तो वी नो कि एफ इज इक्वल टू के. ठीक है जी. अगर इसमें डेल्टा एलोंगेशन होती है तो दैट इज के डेल्टा. ठीक है जी. और एफ बाई डेल्टा इज इक्वल टू के, इसके बराबर होगा. एफ बाय डेल्टा इज इक्वल टू के. तो मैं इसी तरह करता हूं कि डेल्टा को मैं इधर ले आता हूं. तो एफ बाय डेल्टा विल बी इक्वल टू ई टाइम्स ए ओवर एल. ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है जी. तो ई और एल हो जाएगा. तो व्हाट इज दिस? के इज इक्वल टू ई ए ओवर एल. ठीक है जी. तो अगर हम के डी की बात करें तो के डी विल बी इक्वल टू ए डी, एरिया ऑफ द अनथ्रेडेड पोर्शन, multiplied by that the e of that divided by the length of that. ठीक है जी. सिमिलरली आपका के टी क्या होगा? एरिया ऑफ द थ्रेडेड पोर्शन, इसी इक्वेशन से. ये इक्वेशन हम इधर पुट करें. और फिर अगर हम बोल्ट की मालूम करना चाहें तो हमारा के बी क्या होगा? के बी विल बी इक्वल टू के टी के डी. ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए के टी के डी डिवाइडेड बाय के के टी प्लस के डी. और इसकी वैल्यू अगर हम डालें फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस तो विल टर्न आउट टू बी कि हमारे पास ये आपका बोल्ट की स्टिफनेस हो जाएगी. ठीक है जी. बोल्ट की स्टिफनेस हो जाएगी. अच्छा जी. एनी एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें ऑलरेडी डिस्कस है. एनी अदर क्वेश्चन? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? और